Hare Krishna. Hare Krishna. So we are extremely fortunate to have with us a very, very special speaker today. His name is Bhagavad Prabhu. You all know, most of you must be knowing Bhagavad Prabhu. Somehow for the last 2.5 years, we couldn't have an association. Due to our misfortune, we couldn't attract his mercy and attention. But today he is extremely merciful upon us and he is with us. He was a wonderful association. Just a brief introduction of Bhagavad Prabhu. He joined the movement of Srila Prabhupada in Los Angeles in 1982. In the beginning years, he served in the Sankirtan department, distributing very enthusiastically Srila Prabhupada's books. Then he moved to Bhubaneswar, Odisha in 1993. And since then, he has been living here only. And he was instructed by his spiritual master, His Holiness Vaishnava Swami Maharaj, to edit his lecture into publications. And for over 10 years, Prabhuji has been serving as the director of ISKCON Bhopal Publications. He has been editing a magazine called Hare Krishna Kathamrit Bindu, it's an e-magazine, and also a book called magazine, Krishna Kathamrit magazine also. And for these magazines, for editing these magazines, behind this, a long research work, a lot of dedicated efforts. Like just now, he gifted me a magazine on Govardhan. And for this, he was telling me, he has been doing research for the last 25 years. And not only ISKCON, Prabhuji is known for his very deeply philosophical, esoteric, devotional lectures. And he has been empowered to go deep into Goswami literatures and present those esoteric truths in a very simple and devotional manner. So we are extremely fortunate to have his Bhagavan Prabhu with us. And also he is very well known for conducting Govardhan retreats. And also we welcome Her Grace Krishna Mataji. And she has been very ably assisting Prabhuji in all of her services. So let us welcome both of them by loudly chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. I have to say, this reminds me of a saying that I heard once in America, that it's a prayer. Dear God, please let me become the kind of person that my cat thinks I am. I hope I can somehow come up to a little tiny bit of what Prabhuji is saying. Prabhuji कह रहे हैं मुझे इस उक्ति की याद दिलाता है एक कहावत है कि हे भगवान प्रार्थना कर रहा है एक व्यक्ति कि कृपया मुझे ये क्षमता दें कि मैं ऐसा व्यक्ति बन सकूं जो मेरी दिल्ली मुझसे चाहती है. So before we try to speak on Srimad Bhagavatam, my revered spiritual master instructed me to recite a certain set of prayers to the Bhagavatam. This takes about 5 minutes. Please be patient. If you know some of the prayers, you can recite with me. तो इसमें 5 मिनट लगेंगे तो धैर्य बना के रखिएगा और अगर आपको ये श्लोक पता है तो आप साथ में उच्चारण कर सकते हैं. Because we should understand what is the Srimad Bhagavatam. क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम क्या है. You may think it's a book. आपको लग सकता है ये पुस्तक है. You're wrong. आप गलत हैं. It's much more than that. इसके ज़्यादा बहुत कुछ है. You may think it's a religious book. आपको लग सकता है कि धार्मिक ग्रंथ है. It's much, much more than that. परंतु इससे भी बहुत बहुत ज़्यादा है. Krishna Tulya Bhagavata Vibhu Sarvashroy. The Srimad Bhagavatam is a form of Krishna. श्रीमद् भागवतम कृष्ण का रूप है. When you go and you distribute Srimad Bhagavatam, you give people Bhagavatam. When you're giving them the Bhagavatam, they're directly touching Krishna. You're giving them Krishna in their hands. आप जाते हैं वितरण करते हैं और लोगों के हाथ में भागवतम देते हैं. और जब आप लोगों के हाथ में भागवतम दे रहे हैं, वो साक्षात कृष्ण को छू रहे हैं. Prati shloke, prati akshre, nanatakoi. In every verse and every syllable of Srimad Bhagavatam, there's unlimited meaning. भागवतम के हर श्लोक, हर अक्षर का अनंत अर्थ है. So just as we offer prayers to Krishna, we should also offer prayers to Srimad Bhagavatam. जिस प्रकार से हम भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना अर्पित करते हैं, उसी प्रकार से हम श्रीमद् भागवतम को प्रार्थना अर्पित करनी चाहिए.
Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudurayat Vede Ramayanesh Chaiva Purane Bharate Tata Adavante Cha Madhye Cha Hari Sarvatra Giyate Mukham Guroti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripa Tamaham Bhande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam. This is a traditional song that they sing in the villages of Narissa and what they call the Bhagavat Tungis, little temples they have for hearing Srimad Bhagavatam. Paramananda he Madhava Padunga Luchi Makaranda Se Makaranda Panakori Anande Bolo Hari Hari Harinka Name Vandavela Parikori Be Chakadola Se Chakadolanka Paraye Manamo Rahu Nirantare Manamo Nirantare Rahu Ha Krishna Boli Jiva Jao Ha Krishna Boli Jao Jiva Moteu Dada Rada Dava Moteu Dada Rada Dava Moteu Dada Dharma projita kaita vota paramonya matsranam satam Vedyam vastava matta vastu shivadam tapatayo mulanam Srimad Bhagavate Mahamune Krite Kimba Parayashvara Sadjorid Javarujate Chakati Bishu Shushu Vikshtakshanat Nivamako Pataro Galitam Valam Shukamukara Dravasam Yutam Pibata Bhagavatam Rasamalayam Mohoroho Rasuka Bhuvi Bhavuka Anarto Pasamam Sakshad Bhakti Yogam Adhoksaje Lokasya Janito Vidvams Chakre Satvata Samhitam Yasham Vaishayamanayam Krishne Padama Purushe Bhaktirudpadyate Pumsa Shoka Moha Bhayapaha Srimad Bhagavatam Purana Mamalam Yad Vaishnavanam Priyam Yasmin Paramahamsa Mekam Gyanam Padam Giyate Tatra Gyana Vairagya Bhakti Sahitam Naiskarmyam Aviskritam Touch Chinvan Supaten Vicharana Paro Bhaktya Vumichinaraha Arto Yam Brahma Sutranam Bharatata Vinirnaya Gayatri Bhasharupo So Vedartha Pariprimitam Sarva Vedeti Hasanam Saram Saram Samudritam Sarva Vedanta Saram Hi Srimad Bhagavatam Ishyate Tadrasamrita Tripta Shanyam Yatra Sredvachi Kvachit Krishna Bhakti Rasa Swarup Shri Bhagavata Tate Veda Shastra Hoite Parama Mahata Chadi Veda Upanishade Jata Kichu Hoya Tara Arta Lena Vyasa Korila Sanchaya Jai Sutre Jai Rup Vishaya Bachana Bhagavate Seru Slokani Vandana Jivera Nistara Lagi Sutra Koilo Vyasa Mayavadi Vasya Sunile Hoya Sarvanasha Jaho Bhagavata Pada Vaishnava Acharyas
Kanda Shrayakara Chaitanya Charane Bhagavata Jainamane Sejavana Samaha Tada Shasta Ache Janme Prabhu Jama Bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Reading from Grantadhara Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 5, Text number 26. श्रीमद् भागवतम से पाठ नौवां स्कंद अध्याय 5 श्लोक संख्या 26. Please repeat. Shri Shukuvacha Atambarishas Tanayesu Rajam Atambarishas Tanayesu Rajam Samanasileshu Visrijadira Samanasileshu Visrijagira Vanam Vivesatmani Vasudeve Vanam Vivesatmani Vasudeve Mano Dadadvashta Guna Pravaha Mano Dadadvashta Guna Pravaha. Others? Shri Shukuvacha Vanam Viveshatmani Vasudeve Mano Dadadvashta Guna Pravaha Shri Shukuvacha Atambarishastanayesu Rajam Manasileshu Visrijadira Any Matajis? Shri Shukuvacha
Adambarisasanayesu rajyam Samanashireshu visrajyadida Vanam viveshatmani vasudeve Mano dadadvasta guna pravaha Vishubhavacha Adambarisasanayesu rajyam Samanashireshu visrajyadida Shri Sukuvacha. श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा Ata इस प्रकार Ambarisha राजा अम्बरीश Tanayeshu अपने पुत्रों को Rajam राज्य Samanasileshu अपने पिता की ही भांति योग्य Visrija बांट करके Dhira अत्यंत विद्वान पुरुष महाराज अम्बरीश Vanam वन में Vivesha प्रविष्ट हुए Atmani भगवान Vasudeve वसुदेव नाम से प्रसिद्ध कृष्ण में Mana मन को Dadat केंद्रीभूत करते हुए Dvashta नष्ट Guna Pravaha प्रकृति के गुणों की लहरें Translation. Srila Shukadev Goswami continued, thereafter, because of his advanced position in devotional life, Maharaj Ambarish, who no longer desired to live with material things, retired from active family life. He divided his property amongst his sons, who were equally as qualified, and he himself took the order of Vanaprast and went to the forest to concentrate his mind fully upon Lord Vasudeva. श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा तत्पश्चात भक्तिमय जीवन की उन्नत दशा के कारण अम्बरीश महाराज भौतिक वस्तुओं की किसी तरह से इच्छा न रखते हुए सक्रिय गृहस्थ जीवन से निवृत्त हो गए। उन्होंने अपनी संपत्ति अपने ही समान योग्य पुत्रों में बांट दी और स्वयं वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करके भगवान वासुदेव में अपना मन पूर्णतः एकाग्र करने के लिए जंगल चले गए। श्री रूप गोस्वामी इस तरह उपदेश देते हैं कि यदि किसी की एकमात्र इच्छा भगवान की सेवा करने की है तो वह जीवन की किसी भी दशा में मुक्त होता है। Maharaj Ambarish was undoubtedly liberated in any condition, but as an ideal king, he accepted the Vanaprastha's order of retirement from family life. निसंदेह महाराज अम्बरीश किसी भी दशा में मुक्त थे, किंतु आदर्श राजा के रूप में उन्होंने गृहस्थ जीवन से वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया। It is essential for one to renounce family responsibilities and fully concentrate on the lotus feet of Vasudeva. मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है कि पारिवारिक जिम्मेदारी त्याग करके वासुदेव के चरण कमलों में एकाग्र हो। Therefore, Maharaj Ambarish divided the kingdom among his sons and retired from family life. इसलिए महाराज अम्बरीश ने अपना राज्य अपने पुत्रों में बांट दिया और फिर वे गृहस्थ जीवन से विरक्त हो गए। Kuragraganya ganagotra goloruharam Goranga gudatama gopyada kopa briksham Gopala gada ratidam yati singha gora Govinda deshi kavaram satatam namami. So,
we should always look to hear what the Srimad Bhagavatam wants to tell me. हमें हमेशा सदैव इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम मुझे क्या बताना चाहता है. Because the Bhagavatam is a person, it's Krishna. क्योंकि श्रीमद् भागवतम भगवान कृष्ण है. It's not just some history of kings and personalities thousands of years ago. ये मात्र पूर्व वर्षों का इतिहास नहीं है किसी राजा के बारे में. But this is a living book, and this book has pastimes. परंतु ये जीवित ग्रंथ है और इस ग्रंथ में लीलाएं हैं. This book interacts with people. ये ग्रंथ लोगों के साथ आदान प्रदान करता है. This book gives instructions ये निर्देश देता है. if we just put our ear to hear it. अगर हम इसको ध्यानपूर्वक सुनें. So we should always consider, what is the message that he's trying to give me here? तो हमें बहुत ध्यान से इस पे विचार मत करना चाहिए कि मेरे लिए क्या संदेश है. So there are three subject matters that I see that are prominent in this verse and purport. तो ऐसे तीन विषय हैं जो मैं देखता हूँ इस श्लोक और तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण है. Each one of which would take a long time to properly discuss. और हर एक विषय को फिर बताने के लिए काफी समय लगेगा. We're just going to touch on each one a little तो bit. इसलिए हम सिर्फ उसको छुएंगे. The first point is that Maharaj Ambarish, he renounced everything. तो पहला पॉइंट ये है कि महाराज अम्बरीश ने हर चीज का त्याग कर दिया. This is an important point for us. तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण. This is a very relevant point for many devotees here in the Delhi area. और विशेषकर दिल्ली शहर में बहुत से भक्तों के लिए ये महत्वपूर्ण बात है. The Indian people are the most cultured and wonderful people in the world. भारतीय पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सुसंस्कृत लोग होते हैं. And they have a very strong sense of responsibility. और उनके पास बहुत ही सशक्त जिम्मेदारी की ये सेंस होता है. They take marriage very seriously. वो विवाह संस्कार को बहुत गंभीरता से लेते हैं. And when they get married, they have a strong, I have to take good care of my family. और जब वे विवाहित हो जाते हैं तो उनके अंदर ये जिम्मेदारी की भावना रहती है कि मुझे I have to give them a house, पालन पोषण करना है, उनको घर बनने, provide nice foodstuffs for them. उन्हें अच्छा खाना प्रदान करना है. And when the children get older, I have to provide them education. और जैसे बच्चे बड़े हो मुझे उनको शिक्षा देनी है. We were staying with some friends a few days ago. Their daughter, their oldest daughter, is going to school now in America. हम अभी एक अपने मित्रों के साथ रह रहे थे कुछ दिन पहले. तो उनका जो सबसे बड़ा पुत्र है वो अमेरिका में डॉक्टर है. And they told me that it's costing them something like 30 lakhs a month for her education. तो वहाँ पे उसकी एजुकेशन के लिए उनको प्रति माह लगभग 30 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं. It's big anxiety. उनको चिंता होती है. And then they have 2 cars. और उनके पास फिर 2 They have different servants. और अलग-अलग They have a huge house. अलग एक घर है. They have 2 daughters. 2 बेटियां हैं. The other daughter is also going to the university now here in Delhi. और वो विश्वविद्यालय में जा रहे हैं. They have to get both girls married later on. और बाद में उन्हें दोनों का विवाह करना है. And they're nice devotees. और वो बहुत अच्छे भक्त. But they told me, I have no time even for chanting. I can barely chant my japa. और वो बताते हैं कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं अपना जप पूरा कर सकूं. But I don't have time. It's good like this. Okay? I can talk right into it. Is that okay? But I don't like it up here. But they don't have time for reading, for going to the temple. परंतु उनके पास समय नहीं है अध्ययन करने का, मंदिर जाने का. And I can appreciate it. और मैं इसको समझ सकता हूं They're very serious about their responsibility. कि वो बहुत गंभीर हैं अपने जिम्मेदारियों के प्रति. And I'm sure many of you also have similar responsibilities. और मैं निश्चित रूप से आप सबकी भी कुछ न कुछ जिम्मेदारियां होंगी. Maybe you'd like to be like the Brahmacharyas who can just stay in the temple and do kirtan and preach. हो सकता है आप ब्रह्मचारियों की तरह बनना चाहते हो जो मंदिर में रहते हैं और प्रचार कर सकते हैं, कीर्तन करते हैं. Instead, you have to listen to your wife complaining. ऐसा ना होकर आपको अपनी पत्नी की डांट सुननी पड़ती है. You
You have to work very hard to make so much money. धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। That's okay. We should be responsible. तो ये ठीक है, हमें जिम्मेदार होना चाहिए। But don't let those responsibilities devour you like a tiger. परंतु उन जिम्मेदारियों को इस हद तक मत बढ़ाइए कि शेर की तरह आपको निगल जाए। It's not that you go your whole life and, yes, I fed my family, I gave them a house, I have a car, I put my children through school, and that's the end of my life. ऐसा ना हो कि जीवन में क्या हमें लग रहा हो कि हमने विवाह किया, पूरा अच्छा घर दिया, अपने बच्चों को शिक्षा दी, एक घर, एक गाड़ी खरीदी, और ये हमारे जीवन का अंत है। Srila Prabhupada spoke very strongly about that. श्रीला प्रभुपाद ने बहुत ही बड़े शब्दों में Samanya me tat pasabirnara. If that's all you're doing with your life, then really, what's the difference between you and an animal? कि अगर आप अपने जीवन के साथ मात्र यही कर रहे हैं, तो आपके जीवन में और एक पशु के जीवन में क्या अंतर है? Ahara neither bayamaitanam cha. The animals are also eating, sleeping, mating, and defending. आहार निद्रा खाए और मैं तो एक पशु भी यही करता है। So what is our life if we're simply doing the same thing? तो हमारा जीवन क्या है अगर हम वही चीजें कर रहे हैं? So this is a very unpalatable thing, तो ये ना बचाने वाली चीज है। but this is a fact. परंतु ये तथ्य है। Life is like the seasons. जो जीवन है ऋतुओं की तरह है। We have spring, the beginning of our life, शुरू में स्प्रिंग सीजन है जब हमारा जीवन शुरू होता our youth, है। उसके बाद यौवन, and then there's the summer तो गर्मी की तरह है। when we're working very hard as a young person. कि जब हम बहुत ही मेहनत से परिश्रम से कार्य करें। And then comes the fall season. उसके बाद सर्दी का फॉल सीजन आता है। We start becoming 50, 60 years old. जब हम 50-60 वर्ष के होते हैं। And then there's the winter of life. और उसके बाद सर्दी का मौसम। We become 70, 80 years old. 70-80 वर्ष की आयु हो जाती है। Just like in each season you dress in a different way, जिस प्रकार से हर ऋतु में आप अलग पोशाक पहनते you have different activities. हैं, अलग-अलग कार्य होते हैं। So also in these different stages of life, we also have different activities that we do. तो जीवन के इस अलग-अलग पड़ाव में अलग-अलग कार्य होते हैं जो हम करते हैं। Don't just go your whole life and just fill your belly and fill the belly of your family. तो ऐसा मत कीजिए कि पूरा जीवन इसी में बता दीजिए कि अपना पेट भरने में और दूसरों का पेट भरने में। There's a true story. ये असली कहानी है। There was one landlord, very wealthy man, very busy man in East Bengal. पूर्वी बंगाल में जमींदार था जो बहुत ही धनी था। His name was Lalu Baba. उसका नाम था लालू बाबा। And every day he would go for a walk on the bank of the river near his big mansion. तो अपने बड़े घर के किनारे जो नदी है उसके तट पर वो सैर करता था प्रतिदिन। Once, as he was walking, he heard a conversation between two boatmen. एक बार जब वो जा रहा था तो दो नाव ट्रैफिक के बीच में उसने वार्तालाप सुनी। And one boatman, he told the other boatman, "Oh, bye, oh brother, एक नाविक ने दूसरे से कहा, the day is almost finished. दिन लगभग खत्म हो गया है। Now you should take your boat back on the other side of the river. तो आप अपनी नाव को नदी के दूसरे तट पर ले जाएं। You should cross the river." आपको नदी पार कर लेनी चाहिए। So when Lalu Baba heard that, he started thinking. जब लालू बाबा ने ये बात सुनी तो उसने सोचना प्रारंभ किया। And the next day on his walk, he heard another conversation. अगले दिन सैर पे उसने एक और वार्तालाप सुनी। A washerman was speaking to his wife. जो धोबी है अपनी पत्नी से कह रहा था। And that dhobi, he told his wife, "Now the day is over. धोबी ने कहा कि दिन खत्म हो गया है। You should go and burn the basana. Burn the basana. Basana. कि आप जाइए और वासना को जला दीजिए। Basana is a Bengali word. वासना एक बंगाली शब्द है। The bark of a banana tree is called basana in Bengali. जो केले के पत्ते का जो छाल होता है उसको वासना कहते हैं। And the dhobi, they burn that bark to make some alkaline to wash cloth. तो उसको जलाने से कुछ एल्कलाइन
वो इस्तेमाल करते हैं कपड़े धोने में। But the word vasana, you must know also, I think in Hindi, also means desire. वासना का एक और अर्थ भी होता है इच्छाएं। So Lalu Baba, he thought, oh, Krishna's trying to tell me something. तो लालू बाबा ने सोचा कि कृष्ण मुझे कुछ अंकित कर रहे हैं। He was a very introspective person. तो वो बहुत ही मनोविचार करने वाला व्यक्ति था। So he took it to mean that, hey Baba, your life is almost over. तो उसने इसका अर्थ लगाया कि हे बाबा तुम्हारा जीवन लगभग समाप्त हो गया है। Now you should go and burn your vasana, your material desires. तो आप जाइए और अपनी वासनाओं को जला दीजिए। So those statements made a deep impression on him. तो इन वाक्यों ने उनके चित्त पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा था। And he left his opulent life और उसने अपना ऐश्वर्यवान जीवन त्याग दिया। and he came to Vrindavan वृंदावन आए and he started doing bhajan. और वहाँ भजन करना प्रारंभ किया। And in 1810, Lalu Baba, he erected a wonderful temple right near the temple of Narottam Das Thakur in Vrindavan. और श्री नरोत्तम दास ठाकुर के जो मंदिर है उसके बगल में ही लाला बाबू का मंदिर है। And by doing this, he instructed us, he showed us that we should not waste our life. तो उस मंदिर का निर्माण करके इस तरह से उन्होंने समझाया कि हमें अपना जीवन व्यस्त नहीं गवा देना चाहिए। In the 14th chapter, the 10th canto, Lord Brahma offers prayers to Krishna. 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में भगवान ब्रह्मा भगवान कृष्ण को प्रार्थनाएं अर्पित कर रहे हैं। And in text 36, he says, 36वें श्लोक में वो कहते हैं Tavad ragadayastenas tavad kara griham griham tavan moho nigado yavat Krishno natejana. He said that, my dear Krishna, unless someone becomes your devotee, उन्होंने कहा मेरे प्रिय कृष्ण जब तक कोई आपका भक्त नहीं बन जाता then their material attachments उनकी भौतिक आसक्ति and their desires, और इच्छाएं they are stena, they're thieves. Stena means a thief. तो वो एक चोर की भांति है। Kara griham griham, their homes become prisons. और उनके जो घर है वो जेल की तरह बन जाता है। And their affection for their family members become shackles which bind them. और पारिवारिक सदस्यों के प्रति जो स्नेह भावना है वो एक कड़ी जंजीर के समान बन जाता है। So this is the first subject matter in this verse and purport. तो इस श्लोक और तात्पर्य में ये पहला विषय है। We should not be overly attached to material life. भौतिक जीवन के प्रति हमें ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए। We should be ready to give it up. हमें तैयार रहना चाहिए इसको त्यागने के लिए। But there's another point also in this purport, परंतु एक अन्य विषय और है इस a very important point. बहुत महत्वपूर्ण। Srila Prabhupada says in the first sentence, प्रभुपाद पहले ही वाक्य में कहते हैं as a pure devotee, Maharaj Ambarish was liberated in any condition of life. शुद्ध भक्त होने के नाते महाराज अम्बरीश जीवन की किसी भी स्थिति में मुक्त थे। He didn't have to renounce everything. उनको सब कुछ त्याग करने की आवश्यकता ही नहीं थी। But Srila Prabhupada explains in the purport that he did that to show a proper example to other people. परंतु उन्होंने ऐसा इसलिए किया, श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि वो आदर्श राजा के रूप में एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। Similarly, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, he's given a very wonderful commentary on this prayer of Lord Brahma we just read to you. इसी प्रकार श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक बहुत ही अद्भुत तात्पर्य दिया है भगवान ब्रह्मा की इन प्रार्थनाओं पर जो हमने अभी पढ़ी। He says that there's a conversation going on with this verse. एक वार्तालाप चल रहा है श्लोक के साथ। And when Krishna hears Lord Brahma's prayer, Krishna protests. भगवान कृष्ण जब इस प्रार्थना को सुनते हैं तो भगवान कृष्ण विरोध करते हैं। He says, my dear Lord Brahma, if you speak like this, then the sannyasis or renunciates, they may become proud. मेरे प्रिय ब्रह्मा, अगर आप इस तरह बोलेंगे तो जो सन्यासी हैं वो तो गर्वित हो जाएंगे। And they may think that my devotees in Vrindavan, my grahastha devotees, that they're in Maya. और वो सोचेंगे कि जो मेरे गृहस्थ भक्त हैं वृंदावन में वो माया में हैं।
then Lord Brahma, he replies to that. तो जो ब्रह्मा जी हैं वो उत्तर देते हैं He said, yes, this is true for most people. कि हाँ ये सत्य है अधिकतर लोगों के लिए। He said, but what to speak of the grihastas and braj, even your ordinary grihasta devotees, they're far superior to these sannyasi critics. तो वृंदावन में गृहस्थ भक्तों की बात क्या करें, जो आपके साधारण गृहस्थ भक्त भी हैं, वो आपके तथाकथित सन्यासियों से भी ऊपर होते हैं। He said, my dear Krishna, as long as people don't get the mercy of your devotees, हे मेरे प्रिय कृष्ण, जब तक लोगों को आपके जो भक्त हैं उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती, and they don't become your followers, और वो आपके भक्त नहीं बन जाते हैं, then they remain bound up by this material life. तब तक वो भौतिक जीवन के पाश से बंधे रहते हैं। But when they become your devotees, परंतु जैसे ही वो आपके भक्त बनते then they develop attachment for bhakti, हैं, तो भक्ति के प्रति आसक्त होते हैं, and they become detached for everything that opposes bhakti. तो भक्ति के मार्ग में जो भी विरोध करता है, ऐसे हर चीजों से वो अनासक्त हो जाते हैं, And they give their love to you. और वो अपना प्रेम आपको समर्पित करते हैं। And he says their homes, which formerly was like a prison cell binding them up, और उनके गृह जो एक जेल की भांति थे, पहले उनको बांधे हुए थे, for your devotee, those same homes become a place of liberation. तो आपके भक्तों के लिए वही गृह मोक्ष का स्थान बन जाते हैं, Because they become a place for hearing and chanting. क्योंकि वो स्थान बनते हैं श्रवण और कीर्तन के लिए। He says, so how can these grihastas, devotees of yours, be compared to ordinary sannyasis? तो आपके गृहस्थ भक्तों की तुलना साधारण सन्यासियों से किस प्रकार संभव है? There's a nice song that we like to sing. तो एक बहुत अच्छा गीत है जो हम गाना चाहेंगे। You can sing very enthusiastically, maybe. तो आप बहुत उत्साहपूर्वक इसको गा सकते हैं। And I'll sing the Bengali, and then you can chant Hare Krishna in response. तो प्रभु जी And when they- बंगाली में इसको गाएंगे, और When they chant Hare Krishna, you do double time. Single time and double time. Okay, this is a song by Srila Lochan Das Thakur. श्रीला लोचन दास ठाकुर द्वारा निर्मित भजन है। Shri Krishna bhajana lagi sansare ainu Maya jali bandi hoya briksha samana hoinu. Bolo Hare Krishna, Hare Krishna. He said, oh my dear Krishna, Shri Krishna bhajana lagi sansare ainu. I came to this world to worship you. हे मेरे प्रिय कृष्ण, मैं संसार में आया हूँ आपकी आराधना करने के लिए, But something happened. परंतु कुछ हो गया। Maya jali bandi hoya. I became caught in a net of Maya. मैं माया जाल में फंस गया हूँ, And briksha samana toinu. I became a tree. और मैं एक वृक्ष बन गया हूँ। Sneha lata bedi vedi tanu koila seshe. Kira rupe nari tahe hridaye praveshe. Bolo Hare Krishna. The tree of my life was a very nice tree. मेरे जीवन का वृक्ष बहुत अच्छा वृक्ष था। My tree was very beautiful. मेरा वृक्ष बहुत ही सुंदर। And then one creeper came and started coiling around my tree. और एक लता मेरे आसपास लिपटना प्रारंभ हुई। And then an insect that eats trees और इसके बाद एक कीड़ा आया, in the form of a woman स्त्री के रूप में, started eating the heart of my tree. मेरे वृक्ष का जो हृदय है उसको खाना उसने प्रारंभ किया। Phala rupe putra kanya dale bange pare. Kala rupi bihanga upare basa kore. Bolo Hare Krishna. Then, after some years, the tree of my life began to give fruits. कुछ वर्षों बाद ये वृक्ष ने फल देना प्रारंभ। Phala rupe putra kanya, in the form of children, sons and daughters.
पुत्र और पुत्रियों के रूप में। And those fruits, they grew on my tree, and then they fell to the ground. तो जो फल मेरे वृक्ष पर उगे थे, वो फिर जमीन पर गिरे। Then, Kalarupi Bihanga Upade Basakore. Then, manifesting the form of a bird, time, Kala, came and made a nest in the top of my tree. तो वृक्ष के जो सबसे ऊपर की टहनी है, काल आया एक पक्षी के रूप में और वहां पर उसने घोंसला बनाया। Bharitena Paila Gacha Sukaiya Gela Sansarira Davanala Tahe Tela Gila Bolo Hare Krishna. I never had time to pay attention to the tree of my life. I was too busy making money. And I never watered, I never put water on my tree. What is that water? What does Chaitanya Charitamrita say? Shavanam Kirtanam Jale, the water of hearing and chanting. So because I never put water on my tree, what happened to it? Sukai Agela. It became very, very dry. And then Sangsarira Davanala, the forest fire came to my tree. Samsara Dava Nalalita Loka Tranaya Karunya Ganaganata Samsara Dava Nalalita Loka Tranaya Karunya Ganaganata Pratasya Kalyana Gunana Vasya Vande Guru Sri Caitanya Vindam Taptasya Kalyana Gunana Vasya Vande Guru Sri Caitanya Vindam Vande Guru Sri Caitanya Vindam Vande Guru Sri Caitanya Vindam. So the tree of my life caught on fire. Duras Durasa Durbasa Nadue Ute Dumaya Fukada Korai Lochan Mahilama Puriya Bolo Hare Krishna. The tree of my life is on fire. And there are two columns of smoke coming from that tree of my life. Wicked desires and false hopes. And the tree was going up in smoke and burning. And what did he do then? Egao, egao mo Vaishnava Gosai Karunada Jala Sincha Tabi Rakshapai Bolo. What happens if your house is on fire, a very big fire all over? Then you start calling out for help. Egao, egao mo Vaishnava Gosai. Egao mo Vaishnava Gosai. Oh Vaishnav, help me, help me. Hey Vaishnavs,
सहायता करो Praptasya kalyana gunanavasya Vande Guru Sri Charanara Vindam. Gurudev, you help me. गुरुदेव कृपया मुझे बचाएं मेरी सहायता करें When the tree of our life is on fire, we should call out like this to the Vaishnavas. जब हमारे जीवन के वृक्ष ने अग्नि में झुलस रहा हो तो इस प्रकार से अपने वैष्णवों को So in his purport, we were just reading Vishwanath Chakravarti Thakur. He says that when people take shelter of your devotees, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गीता में लिखते हैं कि जब then their home is no longer a place of bondage. तो जब लोग वैष्णव की शरण ग्रहण करते हैं तो उनका जो क्रिया है Maharaj Ambarish is a great devotee. वो बंधन का स्थान नहीं होता He doesn't need to renounce everything, महान वैष्णव है but to teach us, he does so. उनको त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं In the Brihad Bhagavatamrita, there's an interesting conversation between two of the greatest renunciates in the universe. बृहद भागवतामृत में इस ब्रह्मांड के दो सबसे बड़े सन्यासियों के बीच में वार्तालाप है Hanuman is speaking to Narad Muni. हनुमान नारद मुनि से कह रहे हैं Brihad Brata Dharan Asmams Tams Chagar Haschagdhamina Samraja Vyapritan Matva Maparadha Vrito Bhava. He said, hey Narada, these Pandavas, they're much greater devotees than you and I. हे नारद ये जो पांडव हैं आपसे या मुझसे बढ़कर बड़े भक्त हैं He said, we have this Brihad Brata, we're celibates, we're brahmacharis. आपने बृहद व्रत धारण किया हुआ है हम ब्रह्मचारी हैं And Yudhishthir, he's a grihasta. और युधिष्ठिर ये तो गृहस्थ हैं In Odia language, they say pocha grihasta, means a rotten grihasta. ओडिया भाषा में कहते हैं पोछा गृहस्थ That's- खड़ा हो गया That's why people usually sit a little ways away from me. There's a bad smell coming. कि जिस प्रकार से किसी से दुर्गंध निकल रही हो और लोग उसको दूर हटाना चाहते हैं He said, but don't do some aparad. तो उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का अपराध मत Don't think that because we're celibates and the Pandavas are just householders that they're lower than us. ऐसा कभी भी मत सोचिए क्योंकि हम ब्रह्मचारी हैं और वो गृहस्थ हैं पांडव तो वो हमसे नीचे हैं He said, these Pandavas are great devotees. ये पांडव महान भक्त हैं He said, it's true that Yudhishthir is attached to his wife. ये सत्य है ये जो युधिष्ठिर है अपनी पत्नी से आसक्त है It's true that Yudhishthir is attached to his brothers. ये सत्य है कि युधिष्ठिर अपने भाइयों से आसक्त है He said, but na priya deha sambandhan na chaturvarga sadhanat param Sri Krishna parabja prema sambandhata priyaha. He's not attached to them, to their bodies. कि वो उनके शरीर से आसक्त नहीं है Na priya deha sarga sadhanat. He's not attached to them thinking they're going to help him be religious. वो इसलिए आसक्त नहीं है क्योंकि वो सोच रहे हैं कि वो उनकी सहायता करेंगे धार्मिक बनने में He's very attached to them though. परंतु वो उनसे बहुत आसक्त He's very attached because his wife and his brothers, they're great devotees of Krishna. वो उनसे इसलिए आसक्त है कि उनकी जो पत्नी है और उनके भाई हैं भगवान कृष्ण के महान भक्त हैं And Sanatana Goswami, he's commented on this verse. सनातन गोस्वामी इस श्लोक पर टीका देते हैं He says there that Yudhishthir was very attached to Draupadi and his brothers. वो कहते हैं कि युधिष्ठिर बहुत आसक्त थे द्रौपदी से और अपने भाइयों से But he wasn't attached to them because of their body. परंतु वो इसलिए आसक्त नहीं थे उनके देह के कारण He loved them because they were great devotees of Krishna. वो उनसे प्रेम करते थे क्योंकि वो कृष्ण के महान भक्त थे He says that anything or anyone who's associated with Krishna is very dear to a pure Vaishnava. एक शुद्ध वैष्णव के हृदय के करीब होता है कोई भी ऐसी व्यक्ति या वस्तु जो भगवान कृष्ण से संबंधित है Sanatana Goswami says, so when Vaishnavas come together, either in casual or in lifetime relationships, they naturally develop love for one another.
श्रील सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जब भी वैष्णव इकट्ठा होते हैं, चाहे बहुत ही कैजुअल वे में या जीवन पर्यंत संबंध में, वो हमेशा प्रेम विकसित करते हैं। This is also described in the Sattvata Tantra. Sattvata Tantra. तो इस ग्रंथ में भी इसका वर्णन आता है। Hari Lila Satocharo Pareshu Satatam Tvaya Karya Pritistava Harir Yata Bhaktir Nanashyati. That we should learn to love devotees. हमें सीखना चाहिए कि किस प्रकार से भक्तों को प्रेम किया जाए। How do you love devotees? आप भक्तों को कैसे प्रेम करते हैं? Do you say, Manish Prabhu, I like you very much, you're nice to... Would you go to a movie with me? There's a nice new Hollywood movie coming. तो क्या आप ऐसे कहेंगे कि मनीष प्रभु मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ? You come. क्या हम मूवी देखने चल सकते हैं? एक नई मूवी आई है हॉलीवुड। That's not love for the devotees. ये भक्तों के बीच का प्रेम है। Prabhuji, let's go shopping together. प्रभु जी आज चलिए साथ में शॉपिंग करते हैं। No, no. Huh? नहीं। We love devotees for Krishna Katha. हम भक्तों से प्रेम करते हैं कृष्ण कथा के कारण। We develop very deep relationships, loving relationships, when we distribute books together. हम बहुत गहरे संबंध स्थापित करते हैं क्योंकि हम साथ में पुस्तक वितरण करते हैं। When we render services like book distribution, which can be very austere. जब हम ऐसी सेवाएं साथ में करते हैं जिसमें बहुत तपस्या हो सकती है, It creates a great bond. तो ये बहुत ही घनिष्ठ संबंध उत्पन्न करता है। And if we develop love for the devotees for these reasons, और अगर हम भक्तों से इन कारणों से संबंध या प्रेम, then yata bhakti nanashyati, your bhakti will always be protected. You won't fall down. तो आपकी भक्ति हमेशा सुरक्षित रहेगी। आपका पतन कभी नहीं होगा। But if you think all the devotees are in Maya, परंतु अगर आप सोचते हैं कि सारे भक्त माया में हैं, I'm going to chant my japa by myself. मैं अपना जपा खुद करूंगा, I'm better than all these people. मैं इन सबसे श्रेष्ठ हूँ। Good luck. It's going to be very, very hard for you. तो आपके लिए बहुत कठिनाई। Srila Prabhupada said in one lecture in 1968 in Los Angeles, maybe Maharaj was there, श्रीला प्रभुपाद लॉस एंजलिस 1968 में एक प्रवचन में कहते हैं, शायद महाराज वहाँ थे। he said, our society means devotees. उन्होंने कहा कि हमारे समाज को भक्त चाहिए। He said, just as we love Krishna, we should also love the devotees. जिस प्रकार से हम भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं, उसी प्रकार से हमें भक्तों से प्रेम करना चाहिए। So at this time, we want to go out and we want to serve Srila Prabhupada and distribute books. इस समय हम बाहर जाकर श्रीला प्रभुपाद की सेवा करना चाहते हैं। It's a very wonderful service. बहुत ही अद्भुत सेवा है। But it can also be very difficult. परंतु ये साथ में बहुत कठिन भी हो सकती है। We want to go out, but our mind is telling us, you don't want to do that. हम बाहर जाना चाहते हैं, परंतु मन कह रहा है नहीं, आप भी नहीं करना चाहते। So we should develop strong, loving relationships with the devotees. तो भक्तों के साथ बहुत घनिष्ठ प्रेममय संबंध बनाने चाहिए। If we have strong, loving relationships with the devotees based on hearing and chanting and serving, then we'll have strength to face those people who sometimes become angry. अगर हमारे ऐसे घनिष्ठ संबंध है भक्तों के साथ श्रवण कीर्तन सेवा के आधार पर, तो हमें शक्ति मिलेगी ऐसे लोगों का सामना करने में जो कभी क्रोधित होते हैं। I'm in trouble. Rukmini Krishna Prabhu looks very angry. He's going to beat me with a stick. तो शायद मैं बहुत समस्या में हूँ, रुक्मिणी कृष्ण को बहुत मेरी तरफ क्रोधित है, शायद मेरे को डंडे से मारेंगे। I tried to negotiate some time with him in the beginning of the class. I said, so I should finish by 11:30, right? तो क्लास प्रारंभ होने से पहले मैंने उनके साथ समय नेगोशिएट किया था, तो 11:30 बजे तक मुझे खत्म करना था। I knew he wouं't agree with that. तो मेरी बात मुझे पता है, वैसे सहमत। But that's how you do business in India, right? And so he told me, no, 9 o'clock. तो उन्होंने कहा नहीं, 9 बजे। Or maybe 9:15. या सवा 9। Now it's 9:20. 9:20। I'm in trouble. But I have a humble request. परंतु मेरा एक विनम्र निवेदन है। Can I just tell one story? Okay. Because you're all going out and doing this very important service of book distribution. क्योंकि हम बाहर जाकर बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा कर रहे हैं। And doing this service, we want to become good team members. और इस सेवा
करते समय हम एक अच्छे टीम के सदस्य बनना चाहते हैं। See, we made a magazine about Govardhan Leela. हमने एक मैगजीन बनाई है गोवर्धन लीला के ऊपर। And there's two devotees, and two particular devotees, many devotees in this picture, but two in particular. इस चित्र में दो विशेष भक्त हैं, बहुत सारे भक्त हैं, परंतु ये दो भक्त। One is riding on an elephant. एक हाथी पे सवार है। He's a very big, important person. बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है। He's known as Devaraj, the king of the Devas. उसको कहते हैं देवराज। Now there's another devotee who is not so important. एक अन्य भक्त है जो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। He's just a pile of rocks. वो सिर्फ चट्टानें हैं। He's Govardhan. वो गोवर्धन है। Now, which of these two devotees is better? इन दोनों में से कौन से भक्त? Indrari Vyakalam Lokam Hridayanti Yuge Yuge. The Bhagavatam says that Indra is so important. भागवत कहता है इंद्र जितने महत्वपूर्ण हैं। But the Bhagavatam also says that that Haridasa Varya, that Giriraj is the best of the devotees. भागवत ये भी कहता है हरिदास वाले जो गोवर्धन है। What is the difference between the two of them? इन दोनों में क्या अंतर है? If you play football, अगर आप एक फुटबॉल maybe you're very, very expert, हो सकता है बहुत दक्ष हो and you like to keep the ball all to yourself. और आप हमेशा बॉल अपने पास रखें। So all the girls will clap and they'll look at you. जितनी वहाँ पे लड़कियां हैं आपके लिए ताली बजाएंगी। But if you do like that, probably your team will lose. परंतु अगर बॉल आप हमेशा अपने पास ही रखेंगे तो संभावना है आपकी टीम हार जाएगी। Indra is like that. इंद्र वैसे है। He wants all the fame for himself. सारा यश अपने पास रखना चाहता है। And he becomes angry when people don't give him proper respect. और वो क्रोधित होते हैं अगर उनको यथाउचित सम्मान ना मिले लोगों से। Indra is not a team player. इंद्र जो है वो टीम प्लेयर नहीं है। But Giri Govardhan is the greatest of all the team players.